Gurudev Sri Sri Ravi Shankar has taken spirituality to the farthest corners of the world. His meditation and breathing techniques have deeply touched and transformed the lives of over 450 million people in 156 countries by helping them find freedom from stress and negativity. He inspires the highest human values of love, compassion, and togetherness by uniting people from all cultures in a spirit of service and belongingness. He has shown us again and again that the whole world is indeed one family. Sonakshi Sinha joined the galaxy of Bollywood stardom when she debuted in the blockbuster hit Dabangg. She then proved her versatility in Lutera, carving a niche for herself as an actor to be reckoned with. A passionate animal rights activist, she has spoken up for the adoption and protection of street animals. A multifaceted and multi-talented personality, Sonakshi has set a fine example of being a contemporary and independent working woman of today, whilst upholding family values and tradition. Presenting Sonakshi Sinha in a heart-to-heart with Gurudev Sri Sri Ravi Shankar. Namaste, Guruji. It's so nice to finally see you, and I'm already feeling a sense of peace and calm surrounding me by having you on my computer right now. I've been told to introduce you, but I have a question for you. Directly to the point, I need to ask you, how can I introduce someone who needs no introduction? Please tell me. With ease. I can't. I mean, your work speaks for itself. You know, you've touched so many people's lives, 450 million plus and counting. Oh my God, my head! I hear that number and my head starts spinning. But you know, your work speaks for itself. And you know, as soon as I put out the post that मैं आपसे बात करने वाली हूँ, इतने सारे लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आने लगे मुझे कि यू नो हमारे पास भी सवाल है, हमें भी पूछना है गुरुजी से कुछ सवाल. तो आई हैव टेकन questions from my fans, from my family, from my friends. और मेरे questions के लिए बहुत कम समय अब बच जाएगा, मुझे उसी बात का डर है. But I have got my notebook ready with everything written. Okay, I'm ready. Go ahead. So, Guruji, you know, at a time like this where there's so much going on around us, you know, a lot of negativity, there's so much information that we're getting, you know, from our computers, from our phones. रोज कुछ ना कुछ नया मतलब एक बैड न्यूज ही मिल रहा है सबको. तो at a time like this, how is it possible to keep yourself positive? You know, have you ever seen people surfing? When they go in the ocean, in the sea, they surf. I know what do you do when the waves have come? You flow with it and then you take your own your own board. So इसी तरह से जब इस तरह से चारों तरफ होता है, उसको हाँ बोले फिर उसका उपाय ढूंढने लगे. You see what is the solution to it, right? Wow, I think we'll have to like really go deep within to find these answers also, right? Correct. But also for me, I think personally, uh, from what I've seen, you know, around people, from my friends and family, जिनसे मैं रोज बात करती हूँ, उनके आजू बाजू क्या हो रहा है. I think a lot of people are facing very different kinds of emotions. Some people are, you know, happy to be home. Some people are angry. Some people are really worried. You know, so many emotions that people are fighting, I think. And mainly, personally, I feel I'm a very emotional person as well. कोई भी अगर चीज मेरे साथ होती है तो मैं उसके बहुत इमोशनली रिएक्ट करती हूँ, which is the one thing that I really want to change about myself. I want to be able to master my emotions, to control my emotions. How can I do that? You know, first of all, we shouldn't fight with our emotion. It's an emotion which makes you more beautiful. It's an emotion which gives life to you, right? Just imagine you are acting in movies and the movies has, it's all very even, nobody shows any emotion, कोई गुस्सा नहीं कर रहा है, कोई गागा नहीं हो रहा है. It won't be interesting, it will be a flop, right? So, so True. really
the movie that clicks is that really hits is when there is emotions, a peak of emotions होते हैं जाते हैं, but should not forget the director, right? You should always listen to the director, but you should play your full role. Same with our mind. emotions आ रहे हैं तो उसको आने देना चाहिए, उसको एक्सप्रेस भी करना चाहिए, मगर वो सारे emotions के पीछे एक विश्वास होता है. There is a faith that uh, something good is going to happen to me. That faith will carry you along, to where you want to go. पर ऐसे अगर एकदम ज्यादा इमोशंस एक साथ आ गए तो जैसे कहते आई बिलीव दैट इमोशंस मेक अ पर्सन मोर ह्यूमन, है ना. Correct. सो बट अगर ज्यादा हो गया कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, अगर मैं सैड हूँ तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती हूँ, अगर मैं खुश हूँ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हूँ, which I love, but then there are also other things that might not be so हाँ, उस वक्त कोई डिजास्टर ना हो इसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए. अच्छा. तो द मेडिटेशन, Which comes to yeah, meditation gives you that strength that you are able to express your emotion, at the same time you don't lose your centeredness. दोनों एक साथ साथ हो सकता है. आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब इसी में दे दिया. My next one was going to be that I've heard so much about meditation and स्थिरता, दिमाग को स्थिर रखना बहुत जरूरी होता है, to keep your mind calm and still. बट मुझसे कभी होता ही नहीं है. How do I get myself to stop these thoughts? I always try. In fact, लॉकडाउन के टाइम भी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेडिटेट करूँ. I've been putting on these YouTube videos जहाँ पर guided meditation सिखाते हैं, and I can follow it for a little bit of time, but उसके बाद thoughts आने ही लग जाते हैं मेरे mind में. I just need to know. वो ठीक है, वो ठीक है, थॉट्स को आने देना चाहिए. यू शुड जस्ट वेलकम ऑल द थॉट्स, बट ऐसे करते करते थोड़ी देर हम मन को एक तरह से स्थिरता आने लग जाती है. तो 20 मिनट से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. 20 मिनट का ध्यान करेंगे हम थोड़ा सा, और उससे पहले थोड़ा भस्त्रिका करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो एकदम अंदर की स्ट्रेंथ एकदम आ जाती है अपने को. एंड आई थिंक शायद ये भी कोई भी चीज की तरह, इसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करे उतना ज्यादा बेटर आप हो जाते हैं ना इसमें. हाँ, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन दैट. 20-20 मिनट का 2 बार प्रैक्टिस करें तो इट रियली इट मेक्स यू ग्लो मोर. आपके आपके अंदर से भी यू फील सो गुड फ्रॉम इनसाइड. So meditation gives you such deep rest, because the meditation is not doing something. Many people mistake meditation is concentration. कहते अरे मन एक जगह टिकता नहीं है. टिकना ही नहीं है मन को. हमारा मन जो है ना वो हवा से भी पतला है, पानी से भी तरल है. सो जैसे पानी डालोगे तो ऐसे फैल जाता है ना, हवा जैसे बहती है ऐसे मन भी फैलने लगता है. तो वो उसको हमें पहचानना पड़ेगा. इसलिए बैठ के पूरा रिलैक्स करते जाएं, तो फिर उस वक्त जो भी इमोशन है उसके साथ रहें, उससे लड़ना नहीं है, उसको भगाना नहीं है. ये हम एक अपना मन में बना लेते हैं ना पॉलिसी, हम किसी के साथ नहीं लड़ेंगे. तो फिर मेरी भी गलती यही थी कि मैंने भी अपने मन को ऑलरेडी बता दिया था कि किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है. यू हैव टू बी कंप्लीटली एम्प्टी इन योर माइंड, एंड दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन. आई एम सो हैप्पी आई स्पोक टू यू एंड क्लियर्ड दिस डाउट टुडे. गुरुजी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम एक घर में रहते हैं जहाँ पे हमारी फैमिली है, 6 लोग हैं, मॉम, डैड, मेरे 2 भाई, मेरे भाभी, मैं. मैं जब देखती हूँ डेली लाइफ में मेरी मॉम को इतना स्ट्रेस होता है ये एक घर संभालने में, मतलब बच्चों को संभालना, स्टाफ को संभालना, पूरे घर का ख्याल रखना. I want to know is that how do you run Art of Living in 156 countries so peacefully and at the pace that you run it? ओ पूछो मत.
मैं कहता हूँ फैमिली है हमारी, 6 की फैमिली है, आपकी फैमिली जो है इतनी बड़ी है, आप उसे कैसे आप रन करते हो? सब तरह के लोग हमारे यहाँ होते हैं, मगर बड़े प्यार से सब लोग मस्ती से रहते हैं, तो अपने आप मैनेज हो जाता है वो। You know what they say, right? Love makes the world go round. Correct, correct. But I tell you, it is really challenging. We have young kids, we have older people, we have senior citizens, and we have people of all educational and social stratas. They come to us. So it's really a fun. You know, if ever someone wants to make a movie, it will be the most hilarious thing. Just a scene in our We should. just a scene in our dining hall or in our meditation hall is good enough for people to get into splits. So Lovely. I usually say there is not a dull moment in art of living. That's amazing. It's so nice to get your insight on this. In fact, जब lockdown खत्म हो जाएगा, I would love to visit your ashram and come and see what it's like over there. I've never been. It's like this all over the world. कई जगह, you know, I want to tell you one incident that we have people from many countries. So once there was a German boy who fell in love with an Italian girl. They didn't know each other's language, nor did they know English. Just imagine. I told them, you better don't learn each other's language. Let it be that way. So there was no argument. Oh, correct. Speaking of love and arguments, this was going to be my next question. You know, a friend of mine said that या तो इस लॉकडाउन के बाद बहुत सारी शादियां होंगी या बहुत सारे ब्रेकअप होंगे, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में. तो I was just wondering, like, how is it possible to keep your relationship healthy at this point of time, you know, when it needs it the most? क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते और लोगों से नहीं मिल सकते, अगर हम हैं तो बस जिनके साथ हम घर में हैं उनके साथ है. So I'm guessing that a lot of people are finding it, you know, You know, difficult to sustain yeah, relationships at this time. You know, subconscious, in our subconscious mind, we keep expecting everybody to be like us. And this is the time that notion in our mind breaks down. So we need to accept people as they are. If we learn accepting, our purview increases, our our tolerance level goes up. We are able to accommodate others' point of view, others' tendencies, be sensitive and sensible to others' feelings. ये सब करने के लिए growth for oneself and growth for others also इसमें ये opportunity है. But if you don't understand this principle of acceptance, then we will miss out. Also, how important is it to first do that for yourself? To love yourself first, to accept yourself first. Is it only then possible that we can accept others once we have, you know, learned to do that with ourselves? तब क्या करना चाहिए, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, हमारे सारे क्रिटिसिज्म को हम ले लेना चाहिए हमें. Not react to criticism. Yeah, if you do not react to criticisms, then you have acceptance for yourself. But sometimes it gets very difficult, Guruji. Like, I'll tell you one incident which happened with me, okay, a few months back. I went on the show called Kaun Banega Crorepati. So I had gone with a lady called Ruma Devi, who is an artisan. She makes clothes in, you know, and gives women employment. So both of us had gone on the show, and हमें आ गया एक सवाल रामायण से कि संजीवनी बूटी को हनुमान जी ने किसके लिए लाया था. और अब मैं रूमा देवी को देख रही हूँ और वो मुझे देख रही है और हम दोनों को, मतलब हम ब्लैंक आउट हो गए, हम दोनों को जवाब आया ही नहीं. एंड आफ्टर दैट the incident was not so bad in itself. I mean, it was a little bit embarrassing क्योंकि, you know, it's something that
we've learnt as kids, we've seen the show, we've read the books as kids, but itna time ho gaya to certain details just go out Right. of your mind. It was a blank out moment for me. um तो उसके बाद से आज तक it's been like 5-6 months since that, and the kind of negativity and the kind of trolling I get for that one mistake I made, I don't know, it makes me feel so disheartened and makes me think that why are people so unforgiving? It's a very honest mistake. No, but let them have fun. No, doesn't matter. You take it. So what? Okay. So what? Like every day, anything I'll post online, the first question that people ask me, Ramayan dekha ki nahi, Ramayan pada ki nahi, pata chala kiske liye laye Sanjeevani booty, and I'm like, oh God, make it stop. No, no, don't take it also. You don't take it so seriously. You take, okay, like it's a, Yeah, now I don't take it that seriously, but earlier it used to be like, when will they stop? When will they stop? And now it's a part of because life. But sometimes it makes me wonder also. Sorry, see, boliye. if they, no, Sonakshi, ऐसा है, if they find many such mistakes, then they will jump from one to another because they couldn't find many other, they only found one, they will keep holding on to it, you know. So you're saying we should let them hold on to this one only. Yeah, this one they can keep holding on. But it also sometimes makes me wonder, because all these people, just attacking me and about such a beautiful story, and saying that you don't know anything and how can you not know this, and for me the main take of the story was about Lord Ram, just teaching everyone how to be a better human being, to be a better son, to be a better father, to be a better husband, and to be a better person in general. And Yeah. without taking that learning from him, these people just sit and attack me every day, and spread negativity like that. It just seems it's so sad actually. Ah, this only shows their mindset, people's different mindsets, different. They want to take up something like that. So, for you should not mind too much. Don't react. Don't respond too much on that. But you should take it lightly. Stop reacting, and yes, and Take thank it you for giving lightly. me this perspective कि अगर उनको और कोई मिस्टेक नहीं मिल रही है मुझ में, तो वो एक ही चीज को बार बार मुझे टोकेंगे उसके लिए, तो Correct. I really like this perspective. I think I'm going to now see it in that way. Thank you, Yeah. Guruji. Moving on, I think I have quite a few questions from I have asked my fans also online, and a lot of my friends have sent in questions for you, which we'll come to in a bit. But before that, I want to finish all of mine. So let's move on to the next one. I've written that, yeah, we usually find ourselves to be very happy when situations around us are fine and circumstances are going according to how we want them to go to. But when they change often, circumstances, a lot of people find it difficult to uh, kind of, like you said, ride that wave. And in those kind of times, like, even a lot of people have sent me questions about their mental health and how they go into depression, because they feel things that around them are not going according to how they've planned. So how do they deal with that, Guruji? Especially you are asking about people who have depression, right? How to handle the Yes. depression. See, there are two tendencies that is coming among the young people a lot these days. You can see one is aggression. Youth are becoming very aggressive. At the drop of a hat, they start reacting, they start shouting, yelling, and being violent, right? This is one side. On the other side, the youth are getting so depressed. So, for people to get out of both these extremities, extreme tendencies of aggression and depression, you need some guidance. That is where you need a proper meditation, counseling. All this will help. Meditation and yoga definitely helps to be more centered. And there is a mantra for depression. You know what is that? Sit and think about only yourself. What about me? What about me? What about me? You are bound to get depressed. Anybody will get depressed, because what about your
Finally, we will all die. That's it, right? So, so instead of sitting and thinking about what about me, if we start doing some service activity in society, ना औरों को देखें समाज में कितने लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपकी क्षमता की, आपकी कुशलता की ज़रूरत है। आप दूसरों के काम जब आने लगोगे तो आपके मन में ये जो डिप्रेशन है वो अपने आप दूर हो जाएगा। यदि हम हमेशा अपने लिए खुशी चाहते हैं, खुशी लेने वाले बनते हैं, तो कभी ना कभी हम टूट टूट जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हम औरों को खुशी कैसे दें? जैसे आप जब एक्टिंग करती हो, बहुत लोगों को खुशी मिलती है, तो उस उनकी खुशी में आपकी खुशी है ना। You, when जी people are happy about your acting, that makes you happy. So you are entertaining them, you are giving them some relief, you are giving them some message. इस तरह से देना हम शुरू कर दें. What best I can do to people in society. Like your dad was very service oriented. बिहार में कहाँ गांव-गांव में घूमते थे पिताजी. जाके जी he जी used to connect with people so well, right? Even though he may be doing, he would connect with people, and that kindness and connection to people can take you out of depression, I tell you. that's so true actually. I think somewhere I get that from him also. मैं सोचती हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ, but my purpose doesn't stop at just entertaining people. मैं जानती हूँ कि लोग मेरी आवाज सुनते हैं, you know, I can reach out to so many more people. तो इतनी सारी चीजें आती है मेरी मन में कि मैं करना चाहती हूँ, you know, इतने सारे causes है जैसे education for the girl child, ending of domestic Correct. violence, women empowerment, लोगों तक खाना पहुंचाना जिनको खाना नहीं मिल रहा है. So lot of different causes, thalassemia patients के लिए लड़ना. So lot of causes come to my mind. एंड सोचती हूँ कि अब एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जहाँ पे हम लोगों की मदद कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए. उससे बड़ा सवाब का काम होता नहीं है, राइट? करेक्ट, करेक्ट, करना चाहिए वो, और करने से और ज़्यादा खुशी मिलती है. जी जी डेफिनेटली. एक मेरे प्रोफेशन को लेकर आई थिंक एक सवाल है गुरुजी की. यू नो हम इतनी अनसर्टेनिटी होती है हमारे फिल्म लाइन में, सिनेमा के लाइन में कि हम आधी लाइफ तो एक सर्टेन लेवल ऑफ फेम, दौलत, शोहरत को खोजने में हमारी लग जाती है, और जब हम उसे अचीव कर लेते हैं तो आधी लाइफ उसे गंवाने के डर में खो जाती है, यू नो. So how do people deal with that kind of insecurity, that kind of fear that you're going to lose whatever you have achieved? And why is it so important? Why why is it so difficult for people to understand कि you know परिवर्तन अनिवार्य है इस दुनिया में? It has to happen, and why can't people accept that? जब अपना लाइफ सिर्फ प्रोफेशन में ही रह जाता है, चाहे किसी भी प्रोफेशन हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, कोई आईएएस ऑफिसर हो, कोई जज हो किसी कोर्ट में, तो इन सब का क्या होता है? मेरा प्रोफेशन ये है, प्रोफेशन एंड होगा कभी ना कभी, उसके बाद का भय लगता है. हम अपने आप को प्रोफेशन से अलग देखते ही नहीं हैं. जब देखने लगेंगे हम, सिर्फ प्रोफेशन तो एक पार्ट है मेरा, इसके अलावा भी मैं हूँ, मेरा जीवन है, ये हम एक विशाल दृष्टिकोण रखते हैं. when we shift the context to our life, then you see the insecurity will not be there. Then you are respected for who you are, not what you do. अभी एक व्यक्ति का सम्मान व्यक्ति के ऊपर होता है, ना वो क्या करते हैं, वो तो एक गौण है, वो छोटा सा है. वो तो इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा. तो हमारा पर्सनालिटी को हम सिर्फ प्रोफेशन में ही पूरा नहीं लगाना चाहिए, उससे भी बड़ा अपने आप को देखना चाहिए. So true. There's so much more to life, right? करेक्ट, वेरी मच, वेरी मच. And then you see in your own profession, in film land only, there are some people who are you know, almost till the end they are fully, they're active and they are respected.
you know. So जी you earn respect in this way, in manner, you know. You can't demand जी respect in the world. So by your very personality, by your vision about life, people will respect you anyway. And even if they don't, and what about yeah, go ahead. And even if no they no don't please respect go you, it ahead. doesn't matter. It doesn't matter whether people, even if they don't respect, so what? It doesn't matter. It's important that you respect yourself Yes, first. yes. You got it. Lovely. I'm feeling wiser talking to you after talking to you. But what about failure, Guruji? I think, a lot of times when I'm doing failure is also seen in many different perspectives. Different people look at it differently. Uh, मैं जब इंटरव्यूज कर रही होती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी ये फिल्म ने अच्छा बिजनेस नहीं किया बॉक्स ऑफिस पे तो इट वाज अ फेलियर हाउ डिड यू फील अबाउट दैट पर मेरे दिमाग में मुझे ये नहीं लगता कि क्योंकि फिल्म ने अच्छा नहीं किया वो एक फेलियर थी अगर मैंने उससे कुछ सीखा जो आगे जाकर मुझे हेल्प करेगा मेरे लिए तो वो एक सक्सेस ही था and agar mujhe I enjoyed playing that role doing that film working with the people I work with for me it was a great success although it didn't do that well at the box office so sometimes I don't know how to respond to this question कि आपने ये failure कैसे handle किया क्योंकि in general also my parents have taught me कि success और failure को एक ही तरह देखना चाहिए you करेक्ट। know मैं भी and यही that कहूँगा। failure teaches you a whole lot more than success ever can करेक्ट right can you करेक्ट। elaborate on that Guruji इसमें यही है ना भाई, देखो, किसी चीज़ का जैसे फ़िल्म का फेल्योर या सक्सेस एक व्यक्ति पर तो नहीं डिपेंड करता है, वो स्टोरी पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है एंड अन्य सहयोगियों का भी उसमें होता है, भाग होता है। तो कभी वो सक्सेस होता है, कभी फेल्योर होता है, तो इसमें क्या? तो सबका फेल्योर होता है, कैसे-कैसे सब आर्टिस्ट का कभी ना कभी फेल्योर होता है, कभी-कभी सक्सेस होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, अपना कर लिया, अपना 100% लगाया, तो बस मस्त रहे अपना। तो अ, बस बिल्कुल फ़िल्म में I फ़िल्म में I हम फ couldn't agree more फ़िल्म में हम सक्सेस फेल्योर का नहीं देखेंगे तो लाइफ़ में हम सक्सेसफुल हो जाएँगे। लवली अरे वाह ये कोट मैं यूज करूंगी अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में या अच्छा गुरुजी जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मेरे दोस्त थे कई जिनको जब पता चला कि मैं आपसे बात करने वाली हूँ तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए तो उन्होंने मुझे सवाल भेजे हैं आपके लिए हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। मैं पूछ सकती हूँ आपसे हाँ, बिल्कुल। पहला सवाल है मेरी भाभी से तरुणा उन्होंने पूछा है कि नाउ दैट इवन द लॉकडाउन इज एक्सटेंडेड एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर एट होम हाउ कैन समवन स्टार्ट देयर स्पिरिचुअल जर्नी आप दोनों टाइम मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। मेडिटेशन करिए, थोड़ी देर प्राणायाम करिए। You know that your journey has already begun. Actually, when you want to start the journey, you have already begun the journey. Lovely. And she had one more question, which is what is the importance of Yoga Nidra? Since it's about creating awareness in the body, why is it practiced at night? Shouldn't we start our day with it? We can do it. We can do it in daytime. We can do it in the afternoon. नैप लेते हैं ना, नैप के बदले लेट के योग निद्रा कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। Lovely. शॉर्ट शॉर्ट टाइम Then में डीप रेस्ट होता है। योग निद्रा का यही है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, 20-25 मिनट में बढ़िया सा रेस्ट हो जाएगा उससे। थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम माय फ्रेंड जोया जो आपके लाइव मेडिटेशन है वो रोज करती है एंड शी टोल्ड मी कि गुरुजी से प्लीज पूछना कि इफ द माइंड इज अराउंड अस एंड सो इज द ऑरा देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू Aura is nothing but a reflection of the mind. That's it, of the spirit. Yeah. Okay.
अब माइंड में हलचल हो तो ऑरा में दिख जाएगा वो. If you have anger in your mind and it reflects in the aura too, but it's just one shade of mind, you can say, of energy. Hmm. So, I mean, after talking to you, I've realized कि सब mind का ही game है. Once you have control on your mind, you can control the whole world. Yes, yes, yes. मन जीते जग जीत, वो है ना proverb. मन जीते जग जी. जीत, yeah. Wow. Then I asked on my Instagram and Twitter as well, Guruji, for some fans if they had any questions. And, and I have a few. Um, Krishna Palsin Bala has asked, is yoga really a way for our body to channel cosmic universe? Yoga makes you flexible. When the body is flexible, your ego becomes supple or more inclusive, and your mind becomes more fresh and alive. Your intellect becomes very sharp, and your behavior becomes much sweeter. That's it. True. There was a time in the middle where I was also practicing yoga and I genuinely felt so relaxed in mind and body. It really helps. Correct. I should get back to it. Abhilash Bavi Reddy 64 has asked, are you defined by what you do? Are you defined by what you do? What you do is only a reflection, a projection of what you are. So, it only gives a small indication of what you are, but most of what you are is hidden. So, you cannot be totally defined by what you do, who you are. Srivastav Yogendra has asked, how you would define spirituality considering there are different faiths and beliefs in the world. How do they incorporate spirituality in their teachings? See, spirituality unites everybody. It is the core essence of everything that is. So, faiths have different flavors and different do's and don'ts, different lifestyles, but spirituality is away from all that. It is the very soul of all faiths. Ji. Ishwar Kulkarni has asked, क्या पुनर्जन्म होता है? Does rebirth really happen and are there many lifetimes? This is हाँ something which हाँ, I'm also very intrigued with. ये तो बहुत पुराना प्रश्न पूछ रहा भाई. ये तो तुम 20 साल 25 साल पहले पूछता तो मैं बताता. आज तो आप आज तो आप इसको नेट में जाओ, इंटरनेट में, देर आर एम्पल एविडेंसेस. अब you go to National Institute of Mental Health and Neuroscience, they have a department called parapsychology. So today even psychology has accepted it, and they do it as a therapy. Past life regression is done as a therapy to get people into their normal self. So it's an old question, but the answer is yes. Great. I in fact read a couple of books on this past life regression therapy, and I'm very intrigued by it. I would love to know what I तो was in my previous birth. ना ना, वो तो आश्रम में का जब भी आश्रम आएंगे ना, 3 घंटे टाइम लेके आना, वो 3 घंटे में आपको एक्सपीरियंस करा देंगे वो. यू कैन नो योर ओन अरे पास्ट लाइफ. गुरुजी, पक्का after this lockdown, I am coming there first. uh, One last question, Guruji, from my fans. Piyush K. Sahu has asked, Sonaji, please ask Guruji how to stop overthinking. Overthinking. Get on the treadmill and start running. When you run fast, you can't think. और ठंडे पानी में ना हो. हम कहते थे ना, गंगा जी में डुबकी लगाओ तो कुछ नहीं सूझता उस वक्त. So I can give you whole list of things that when you do, your mind will stop. Or watch some breathtaking scenery
or a movie or anything, or start singing at the top of your voice. You know, all this can help you to to find that inner serenity. So true. Actually, when if you do something that you like singing, dancing, like for I sketch when I want to calm my mind down. It's like meditation for me. So I just take a pen and paper, and the thought just flows through, and my hand starts moving on its own, and I'm like, Correct, it's just correct, me and the paper, and I'm not thinking of anything. So correct. true. You should find an activity that you really like. Yes, Yeah. yes. नहीं तो बाजा बजाओ, कुछ नहीं तो थाली लेके बजाते जाओ जोर से. ये महीना बहुत थाली बजा लिया गुरुजी. But thank you so much for talking to me today, Guruji. It was really wonderful, and so much insight, so much wisdom. I'm already feeling so refreshed. I think a lot of us who are watching, even the viewers who are watching, really needed your positivity and some strength from you to go through this very difficult time. And thank you so much for Wonderful, spreading wonderful. positivity not only Actually, to us but in the world. and you keep doing what you are doing. You are doing good. You are doing great, I would say. Yeah. Thank you so All much, the, Guruji. all the best. All the Looking forward to meditating with you now. yeah, yeah, will do. So let us sit comfortably, easily. पहले आराम से बैठ जाएं और खूब झाड़ दें अपने हाथों को झाड़िए. Shake your hands. जो भी अंदर रेस्टलेसनेस रही होगी वो सब निकल जाना चाहिए. रेस्टलेसनेस सब चली जाएगी. Shake your hands and move your head left and right and sit with your spine erect and keep your palms on your lap. घुटनों के ऊपर अपना हथेली रख दें. हथेली आकाश के ओर खुला रहे और आंखें बंद रहे. Become aware of your whole body. अपने ही शरीर पर पूरा ध्यान लेके आए. Your body is the most precious gift to you from the divine. ईश्वर से मिला हुआ एक अद्भुत देन है हमारा अपना शरीर. एक बार पूरा नज़र अपने ही शरीर पे डालते हैं. बंद आंख के साथ मन ही मन पूरे शरीर को देख लें. शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दें और सम्मान करें. और पाँवों को सम्मान करिए. इन्हीं पाँवों से हम चल के जाते हैं, सब कुछ करते हैं और हम धन्य भागी हैं इन पाँवों के लिए. और शरीर के मध्य भाग में अपना ध्यान लेके आए और दोनों हाथ और हथेली, इनसे ही सब काम हम करते हैं. हम धन्य भागी हैं इन हाथों के लिए. और अपनी आवाज़, अपनी ही गले, चेहरे के लिए भी हम धन्य भागी हैं. आँख पर ध्यान ले जाएं. इन्हीं आँखों से हम तरह तरह की रंग देखते हैं. पूरी दुनिया के साथ हम संबंध रखते हैं. इन आँखों के लिए धन्यवाद. हम धन्य भागी होते हैं. हम अपने कानों के लिए धन्य भागी हैं. हम सुन रहे हैं, सुनते हैं बहुत सी बातें.
और हमारी त्वचा के लिए भी ऐसे ही हम धन्य भागी हैं। We are grateful for all the five senses, the sense of touch, taste, sight, and hearing, and fragrance, smell. We are grateful for all these five senses, and we are grateful for our own mind. Though it jumps here and there, we are grateful for our mind and our intellect too. अच्छी बुद्धि है, इसके लिए भी हम धन्य भागी हैं। We are grateful for our own life. अपने ही जीवन के लिए हम कृतकृत्य है, धन्य भागी हैं हम। Now let us take a deep breath in and breathe out. हमारे चारों ओर हवा है, वायुमंडल है। यदि ये वायुमंडल दूषित हो जाता है तो हमारा शरीर टिक ही नहीं सकता। ये वायुमंडल के लिए भी हम धन्य भागी होते हैं। We are grateful for the air that is all around us and within us. Let's take a deep breath in, एक गहरी सांस लीजिए, रोकें और धीरे धीरे छोड़ते हैं। Take another deep breath in, hold the breath and let go. Now let us chant Om 3 times. 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का अर्थ ही अनंत शांति और असीम प्रेम। ओम means infinite peace and unconditional love. Let us take a deep breath in, and as we breathe out, chant Om and feel that vibration all around us. And feel the vibrations all around you and inside of you. जो भी विचार आ रहे हो आने देना। Accept all the thoughts. Whatever thoughts are coming, let them come. Know that you are fire. आप आग हो। आप में सारे विचार लकड़ी जैसे आते हैं, जल जाएंगे। कोई चीज आपको बुझा नहीं सकती है। आप ऐसे आग हो। अपने आप में विश्राम करें।
Repose in yourself with a smile. Breathe in with a smile and breathe out with a smile. Let the smile percolate through the whole body. आपके चेहरे में जो मुस्कान है वो शरीर के एक एक अंग में उतरने दें उसको। आंखों के पीछे भी वो मुस्कान को लेके जाएं। जैसे सिर के जो पिछला हिस्सा है वह भी मुस्कुरा रहा हो। पूरा ध्यान सिर के पीछे ले जाते हैं। अब सब प्रयत्न छोड़ दें और विश्राम करें। कुछ भी नहीं करना है। Not to make any effort at all. Let go of all your efforts and simply relax. As you relax, your mind starts expanding. एक और गहरी सांस लेते हैं। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस छोड़ते हैं धीरे धीरे। Become aware of the vast sky and millions of stars. Relax more and more and more. सब प्रयत्न छोड़ दें। मन को जहां भागना चाहे तो भागने दीजिए। आप विश्राम कर रहे हो। ओम शांति शांति शांति। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। शरीर को और ढीला छोड़ दें। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो।
अच्छा लगा ना? बहुत ज्यादा I'm feeling so relaxed. थैंक यू सो मच गुरुजी. आई थिंक ऐसी शांति प्राप्त करने के बाद I'm going to make sure that I do this, make it a habit, make it a practice, और मैं ये रोज करूं क्योंकि मुझे भी बहुत जरूरत है अपने माइंड को काम करने की. तो हाँ, मैं अक्सर इसको कहता हूँ डेंटल, जैसे डेंटल हाइजीन होता है ना, सुबह उठते ब्रश करते ना, ऐसे मैं मेडिटेशन को कहता हूँ, मेडिटेशन को हम कहते हैं कि ये मेंटल हाइजीन है. रोज ये करने से एकदम ताजगी महसूस होगी आपको. बहुत अच्छा. बिल्कुल. गिव माय थैंक यू सो मच ग्रीटिंग्स, गुरुजी. धन्यवाद. गिव माय ग्रीटिंग्स टू एवरीबॉडी इन द फैमिली. पापा को, मम्मी को, सबको. Definitely, and they all send their love to you as well. Namaskar, Guruji.